चांद से आई बड़ी खुशखबरी, चंद्रमा एक्सप्रेस की हो रही तैयारी, ट्रेन चलाएगा नासा। पिछले कुछ सालों से चांद पर असंभव जैसे प्रोजेक्ट कामयाब हो गए। इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराकर इसका सबसे ज्यादा ताजा उदाहरण पेश किया। चांद पर पिछले कुछ सालों में तमाम देशों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और काफी ज्यादा एक्टिव भी हो रहे हैं वो। अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चांद पर असंभव जैसा मिशन पूरा करने में लग गई है। नासा अगर कामयाब हो गया तो चांद पर इंसानों की चहलकदमी मुमकिन कर पाएगी। नासा चांद पर रेलवे लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। नासा का चंद्रमा एक्सप्रेस मिशन अभी तक कितना पहुंचा है, आइए बताते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा चंद्र एक्सप्रेस को मुमकिन करने में जुटी है। नासा का ये प्रोजेक्ट हालांकि अभी किसी साइंस फिक्शन जैसी फिल्म जैसा लगता है और यकीन मानिए कि अभी ये नामुमकिन जैसा भी है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दशकों में वो ऐसा कर लेगा। काल्पनिकता को वास्तविकता के चोले में आमादा नासा की टीम चांद पर रेलवे लाइन के लिए फंड भी जुटाने में लग गई है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये संभव हो गया तो ये मानव जाति के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आइए बताते हैं कि नासा की योजना क्या है। अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के बारे में बोलते हुए नासा के वैज्ञानिक जॉन नेल्सन ने इसे विज्ञान का चमत्कार बताया है। उनके मुताबिक इस मिशन के साकार होने की कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन भविष्य में चांद पर रेल परियोजना किसी दिन एरोस्पेस मिशन का हिस्सा बन सकती है। इस प्रोजेक्ट में चांद पर रेलवे लाइन बिछाने के अलावा मंगल ग्रह पर इंसानों और माल के ट्रांसफर के लिए अत्याधुनिक प्रणाली विकसित करना है। नासा की ये परियोजनाएं इन्वर्टेड एडवांस कॉन्सेप्ट कार्यक्रम का हिस्सा है, यानी कि NIC। इस तरह की कुछ 6 परियोजनाएं चल रही हैं। नासा को प्रोजेक्ट पर कितना यकीन है, आइए बताते हैं। वॉशिंगटन में नासा के प्रमुख जॉन नेल्सन INC कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हमारे साथी वैज्ञानिकों की नजर में कोई भी कार्य असंभव नहीं है और वो किसी भी कार्य को ये कहकर नहीं छोड़ देते कि नहीं हो पाएगा, ये असंभव कार्य है। कुल मिलाकर नासा इस पर काम तो कर रहा है, लेकिन अभी उसके पूरे होने की गारंटी उसके पास कतई नहीं है, बल्कि सिर्फ संभावनाओं पर ये कोशिश में जुट गया है। देखना ये होगा कि किस तरह से नासा की ये पहल किन कदमों तक पहुंच पाती है। आइए आपको दिखाते हैं चंद्रमा की वो तस्वीरें जब चंद्रयान लैंडिंग वहां हुई थी, और साथ में वो तस्वीरें जो कि काफी दुर्लभ हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश भी कीजिए कि नासा का ये प्रोजेक्ट जो कि चांद पर रेल चलाने का है वो कैसे हो पाएगा, और अगर हुआ तो कितना अद्भुत होगा। Atlantis now in control of the countdown. 20. Firing chain is armed. Sound suppression water system activated. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Atlantis now in the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Outpost. 30 seconds into the flight. Atlantis almost 2 miles in altitude, almost 6 miles downrange from the Kennedy Space Center already, traveling 500 miles an hour. The 3 liquid fuel main engines now throttling back to 72% of rated performance, going into the bucket, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier.
55 seconds into the flight, all systems operating normally, 900 miles an hour. The speed of Atlantis right now, 6 miles in altitude, 9 miles downrange. Atlantis, go with throttle up. Copy, go with throttle up. The throttle up call acknowledged by Commander Charlie Hobaugh, joined on the flight deck by pilot Butch Wilmore, flight engineer Randy Bresnick, and Leland Melvin. Seated down on the middeck are Mike Foreman and Bobby Satcher, kicking off their work week with a Monday commute to orbit. 1 minute, 30 seconds into the flight, Atlantis 13 miles in altitude, 15 miles downrange, traveling almost 2,000 miles an hour. Three good auxiliary power units, 3 good fuel cells, 3 good main engines. One minute, 50 seconds into the flight, 10 seconds away from solid rocket booster separation. Booster officer confirms staging a good solid rocket booster separation. Guidance now converging. Atlantis steering into the center lane of Highway 129 en route to the International Space Station. 2 minutes, 20 seconds into the flight, 34 miles in altitude, 48 miles downrange. Atlantis traveling 3,200 miles an hour. The propulsion officer in mission control reports that the orbital maneuvering system engines have ignited. Atlantis kicking on the afterburners. Copy, 2 engine down. Atlantis flying on the singular power of its 3 liquid fuel main engines, draining about a half a ton of fuel per second from the large fuel tank. Coming up on the 3-minute mark into the flight, Atlantis 46 miles in altitude, 81 miles downrange, traveling almost 4,000 miles an hour. Atlantis speeding straight as an arrow toward its date with the International Space Station Wednesday morning. Three and a half minutes into the flight, all of Atlantis' systems functioning by the book. 55 miles in altitude, 120 miles downrange, traveling almost 5,000 miles an hour. Atlantis, negative return. Atlantis copies, negative return. Atlantis now too far downrange, too high in altitude to return to the launch site in the event of an engine failure. All 3 engines performing perfectly. 4 minutes, 20 seconds into the flight. Atlantis now 62 miles in altitude, 180 miles downrange, traveling almost 6,000 miles an hour. All systems performing normally. Atlantis on course, on track for its preliminary orbit. The Environmental Systems Officer reports a good flash evaporator system activated for Atlantis, providing cooling for the shuttle's avionics until the payload bay doors are opened about an hour and a half into the flight. Atlantis, press to ATO. Copy, press to ATO. That call up from Capcom Chris Ferguson indicating that Atlantis can now make minimal orbital altitude targets in the event of an engine failure. However, all 3 engines continue to perform normally, as do the auxiliary power units and the 3 power-producing fuel cells. 5.5 minutes into the flight, Atlantis now 67 miles in altitude, 312 miles downrange, traveling almost 8,000 miles an hour. Frankfurt, single engine, ops 3.
Atlantis now beginning to roll to a heads-up position, the main engine swiveling, enabling the shuttle to move to a heads-up position above its fuel tank, gaining more favorable communications through the tracking and data relay satellite system as it heads uphill. Atlantis, press to MECO, single engine Zaragoza 104. Press to MECO, single engine Zaragoza 104. That call from Capcom Chris Ferguson to Commander Charlie Hobaugh indicating that Atlantis can make normal orbital cutoff targets in the event of an engine failure. Go for the pitch. Okay, nominal shutdown, go for plus X, go for the pitch. Now 6 minutes 45 seconds into the flight. Atlantis 66 miles in altitude, almost 500 miles downrange from the Kennedy Space Center, traveling almost 11,000 miles an hour. 90 seconds left in powered flight. Atlantis, single engine press 104. Single engine press 104. Coming up on the 7.5-minute mark into the flight, the main engines will once again be throttled down to limit the stress on the shuttle and its 6 crew members to that of 3 times the effect of gravity. Atlantis approaching a speed of more than 4 miles a second. At the time of main engine cutoff a minute from now, Atlantis will enter its preliminary orbit at a speed of 5 miles a second. Seven minutes, 40 seconds into the flight. Atlantis providing 8 minutes, 10 seconds into the flight. Standing by for main engine cutoff. Main engine cutoff confirmed by the booster officer, standing by for external tank separation. And the bird's eye view from the external tank camera of external tank separation. Atlantis now in its preliminary orbit. Commander Charlie Hobaugh will now maneuver Atlantis so that cameras embedded in the shuttle's umbilical well can perform photography of the discarded external fuel tank. And Mike Foreman and Leland Melvin are about to use digital still and video cameras to capture handheld imagery of the tank for downlink a few hours from now. A flawless climb to orbit for the shuttle Atlantis and its 6 crew members en route now to the International Space Station. MECO ohms 1 is not required. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।